Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with daily analysis of Nifty and Bank Nifty. We are definitely going to discuss in detail as to what was the price action that happened today in Bank Nifty. But before that, let's first finish the analysis for tomorrow. Coming back to the charts of Nifty, I'm looking at the weekly time frame. First of all, I have actually forgotten to post it on Twitter as well. Tonight we have Fed meeting. Everyone knows that the rates are gonna remain status quo. It's just the commentary part that everyone is concerned about. Tomorrow, definitely, we are going to open either with a gap up or a gap down. In fact, surprisingly, today also we were, since Dow closed more than 300 points plus, and Gift Nifty was indicating a gap up of roughly 50 to 60 points. Still, we opened flat in Nifty. It was just 23 points, and I guess in Bank Nifty it was up by only 8 points. First and foremost, as Aditya has always explained, how to find an intermediate top. First, you have to get a red candle in a weekly, which is the alert candle. The following week should close below the low of this alert candle. See, in this case, this was the alert candle, but the following week failed to close below that. It just made a wick. This week we will get to know only on Friday. So till then, we are not going to, even bother about it, because every day the price keeps moving like anything. Now let's go to the daily time frame. Daily time frame, what we have seen, it's basically a breakdown of this particular channel, and this was a good candle which confirmed the breakdown. Plus there was this small pole and a flag in daily as well. But the problem here is this is a very good support zone for Nifty. That's the reason Nifty is unable to break below 21,800 and close below that. So the moment that happens, only then we can clearly see some sort of a down move till 21,600 or 21,575. But till then, till the time Nifty fails to close below 21,800, because this is a good support zone. So let's wait and watch till then. And hence I have not given any targets also for this particular channel breakdown, because overall on a weekly and a monthly time frame we are still in higher highs. This is just one anecdote that basically there was this RSI divergence being spotted in Nifty, which I have shared it on my Twitter profile as well yesterday. So I'll just take that off. I guess here what we can see, there is another channel formation. So usually what happens in case of a channel, what we usually see is there is a sharp up move and a sharp down move. Typically how it behaves, it goes up, it comes all the way down, again tries to go up, again tries to come down. And this is again moving in this particular channel fashion in case of a Nifty. So now, very important thing to note, this was the immediate resistance which I had marked yesterday. Why it was an immediate resistance? Because erstwhile it was a good support. In fact, Nifty took support of this particular low for almost 4 days, and then it finally broke yesterday. So the first time it came here, and hence there was this resistance. So now this resistance is weak, so I'll take this off. Now this is not an immediate resistance for me. Now the first and foremost resistance for me would be 22,040 zones. Why? Because obviously support resistance zones, and also because there is a gap here. So what happened today? Let's discuss that. Market went below previous day low, and just the moment it went below this particular level, and then there was this supports, it hit the support and immediately rushed back inside, thereby creating volatility. Now what had happened, it first broke the previous day low, and then it actually broke the current day's high as well. So there was this kind of mega volatility. Why there was mega volatility? Because prices moved down, prices moved up, and then exactly closed where it opened. Can you see this? It is again 855, and the closing is somewhere near to yesterday's close itself. It was somewhere around 820 or 810. So today it closed around 855. Now for tomorrow, what we are going to plan, let's say in case of a mega gap up. Now mega gap up would be anything about 80 points or 90 points kind of a up move. If that happens, we will simply wait for first 30 minutes for the market to settle down, because usually it so happens that if market, let's say, opens somewhere around 22,000, then it will see some sell off, or first it will try to go up and then come down, and so on and so forth. So what we will do, we'll just wait patiently for the first 30 minutes, and then whichever side it breaks of the first 30-minute range, we will try to take a trade on that side. This is only if we open plus minus 80 to 90 points. This I'm talking about a mega gap up because of some Fed event in case. Now let's say, now if we open flat,
market will definitely try to move up again. And since this level has already been tested, the moment this level gets taken out, this 920 950 level gets taken out, we will definitely go long for only this much level, 22040 to 22050 levels. Okay, and this is where we will try to book our profits. If it open flat, I am expecting market to move a bit more up. Okay, now if we open mild gap up, which would be around 900 920 levels, again I'm expecting market to slowly move on in the up direction, and this is the first level where I will try to book my profits. Now for some reason, if at all we open below this particular zone, which is 21,800, then again we will see some sort of a selling pressure in the market and we will try to go short. Now the problem with going short is, like, see, this day yesterday, we definitely, everyone will say yesterday was a very good trending move, but again I'll tell you, see, first of all, the 100 points was, taken away because it opened gap down. There was this move, again a up move, again this move, again up move. So it was not a very clear, see, this is a clean trending move or this is a clean trending move, and some sort of a clean trending move is missing. The only reason is because there are so many supports out here. So the moment if you even just go short, you have to be very quick in booking profits. So let's say if it breaks 21,700, you should be very quick to book your profits at 21,650. So maximum 30 to 50 points is what you should try to target in case of Nifty, because the moment it touches here, it will immediately reverse back. So it won't even give you time to trail or anything of that sort. So just book out immediately then and there, because there are so many supports out here. So as I said, if we open flat, I'm expecting market to move up. If we open mild flat, again up move. If we open below 21,800, then I'm expecting market to move down, but then you have to be very quick because again it will give some this kind of a spike. Now let's quickly go to Bank Nifty and what an expiry it was. So essentially what happened today, again, we were expecting at least today we'll get some sort of a clean trending move, but that failed to happen. So Bank Nifty on a weekly time frame, it is again sitting somewhere in this support zone. So that is the reason we are seeing this sharp down move and again a sharp spike, because it's near supports. Every time buyers get active over this particular level in this kind of a zone. Now let's go and check on the daily time frame. So daily time frame, it's just a series of dojis, I would say. So from this day to this day, it's only dojis. And in fact, yesterday and today, Bank Nifty closed almost in the same range. After doing this kind of dance for the whole day, it actually closed more or less exactly where yesterday we closed. Yesterday the closing was 46,384 and today's closing is 46,310. This doji, this doji, this doji, it basically tells you that the market is confused. The market doesn't know whether the buyers are winning or the sellers are winning. I'll just show you on the 15-minute chart. In fact, yesterday what happened? Yesterday we were trading in a very small range. So it was very clear, market will definitely give a breakout. Morning momentum was such that it broke on the downside. So obviously we also took bearish trades, and then this was the moment where we realized market might not go further down, and this is exactly where we converted our call sell into strangles. And thereafter market tried to inch up. Every time it was inching up, with our calls getting spiked, we were trying to shift up our puts, as well as we took our calls further away. Finally it broke current day's high at one point of time, and this is where the calls spike like anything. And this is exactly I had to where I had to book some losses on my call leg, and I shifted even further away OTM calls. Now the problem was, when I did that, I actually moved my puts a bit more closer. Okay, and then I had to see this downfall. Obviously my puts spiked. Luckily we could manage to escape with a flat day. Otherwise this kind of moves where you are seeing a sharp down move, where puts will spike like anything, thereafter calls will spike like anything, and then again puts will spike. So this is basically a three-way move. It is very difficult to handle, because see, mentally you basically decide a range that market is not going to go beyond this particular level, and so on and so forth. But the moment this kind of spiking happens, then you actually find it difficult to hold your trade. So that's the reason this kind of three-way moves becomes very difficult to handle. Like, I'm more than happy to close the day in at a flat note.
So please comment below how many of you got screwed, or how many of you made money out of this particular move. It will be interesting to read. Let's go and check what's happening in Bank Nifty. The resistance was tested here. This is a very old channel in 15 minute. Can you see this? 6th March, second resistance here, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Equally, these supports are also tested quite some time. Okay, but obviously you can see the number of times the resistance has been tested is much higher, and usually falling channels breakouts are much more powerful. Now if you want a video on chart patterns, especially on channels, you please comment below, so then I'll make video separately dedicated to channels. So today again, why I was there biased on the rolling up puts was because of this particular candle, this which the candle which happened at 1 o'clock. This is a very clean sort of a breakout of this particular channel for me. And this, as I showed, this channel has been tested several times. Then there was this breakout, and there was this some sort of a small follow through. But the problem was it again came down. Now, till here, I was thinking it could be a retest, but then it came down all the way, and then it is here. It is somewhere around here. Now, right now, even I don't know whether it's a retest or not. So what we are basically going to do, sometimes it so happens that even if it is a retest and just because of an expiry, it gets extended a bit. So let's see tomorrow if this particular breakout is good enough. So we should see Bank Nifty to trade above this particular level, 46,700 and 46,800, above that. For tomorrow, the immediate support is 46,200. This one is at S1, S2. As I said, there are so many supports here, and that's the reason we are seeing this kind of a sharp up move. The moment prices touch here, there is a bounce, and market was actually respecting this particular channel. It was touching here and again a bounce, touching here again a bounce, touching here again a bounce. If at all market opens flat, in case of a Bank Nifty, I'm expecting an inside bar because today's range was quite big, so I'm expecting an inside bar. But let's say because of Fed event, we are opening with a mega gap up, and if the gap up is somewhere around 46,600 and 46,700 zone, I'm expecting market to then consolidate a bit and then give a breakout on the upside. If at all we break on the upside, then the first level to look for or to book your profits is 47,200. So just book before touching this 200 level. Could be 47, 150, 170 levels. If at all market opens with a big gap down, which would be somewhere around 46,000, then we will definitely wait whether market takes goes down a bit, takes previous day low support and bounces back, or whether market stays here and forms a range and even breaks this particular low. It's basically we have to wait for if at all there is a gap down. But if it is a gap up, I'm expecting market to move a bit, because see, all these levels have been tested several times. This particular resistance of 46,750 to 46,800 has also been tested several times. So then I will expect market to move up. As I said, this is a very old resistance. This is a very old channel. So that's the reason I'm expecting, and there is a breakout which is there. As I said, I'm not too sure whether this breakout has been failed or not. Obviously, this particular down move even I can see, but it's precisely because of expiry. So that's the reason I just want to give one benefit of doubt for this particular Bank Nifty price action. For those of your Hindi folks, I'll just wrap it up in Hindi. तो निफ्टी के लिए हम देखते हैं पहले तो निफ्टी में क्या हुआ है. निफ्टी में आज भले ही प्रीवियस डे, आज का जो लो है, सॉरी कल का जो लो था प्रीवियस डे लो, मार्केट ने बिल्कुल ब्रेक किया, बट इमीडिएटली मार्केट ने बाउंस बैक किया. ये इसके लिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर काफी सारे सपोर्ट्स है निफ्टी के पास. तो एवरी टाइम वो नीचे जाता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक आता है इसमें. अब तो आपको क्लीन मूव नहीं मिल रहा है इसमें. जैसे कि अगर पहले कैसा होता, ये देखिए ब्रेक हो गया तो फिर ये क्लीन मूव है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बट अब नहीं मिल रहा है. दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो हमारी अर्स्ट वाइल सपोर्ट थी, वो हमने कहा था कि फर्स्ट टाइम तो वो रेजिस्टेंस लेगी, तो उसने ले ली आज. तो अब वो रेजिस्टेंस मतलब अब वो तोड़ सकती है उसको कभी भी. तो अगर कल कोई मेगा गैप अप होता है, बिकॉज आज हमारे पास फेड की इवेंट है, राइट, आज हमारे पास फेड की इवेंट होने के कारण अगर कल कोई मेगा गैप अप होता है जो कि 80 या 90 पॉइंट्स प्लस या माइनस 80 या 90 पॉइंट से होता है, तब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल का रेंज मार्क करके रहेंगे. फर्स्ट 30 मिनट मतलब 15 मिनट की कैंडल्स जो 9:15 से लेके 9:30 तक है, हमको वेट करेंगे. उसके बाद मार्केट जिस भी तरफ ब्रेक करती है, मतलब मान लीजिएगा यहाँ पर आपका ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, और
इसका बेसिकली हमने हाई और लो मार्क कर लिया। तो ये जिस भी तरफ टूटता है, अगर ये ऊपर टूटता है तो हम ऊपर की तरफ लेंगे, नीचे टूटता है तो हम नीचे की तरफ लेंगे। यही सिंपल कर, ये इससे ज्यादा हम मतलब डिफिकल्ट नहीं करेंगे। जिनको भी प्राइस एक्शन समझती है, आप लोग को सिर्फ यही याद रखना है कि अगर मार्केट ऐसी जा रही है पर जाके नीचे आके फिर ऐसे तोड़ रही है ऊपर की तरफ, वो उसके लिए फिर आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर ऐसी जा रही है मतलब ऊपर से नीचे आई फिर एक पुल बैक देती है और फिर ब्रेक करती है। अगर ऐसे जा रही है तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड करनी है, ऐसे जा रही है तो आपको नीचे की तरफ शॉर्ट के लिए ट्रेड करनी है। ये तो जिनके लिए प्राइस एक्शन जिनको समझ में आता है। सिंपल रखते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है तब हम क्या करेंगे, प्लान 700 के आसपास का लेवल नीचे की तरफ लोग शॉर्ट करके रखेंगे और ऊपर की तरफ 22,000 के आसपास लोग शॉर्ट 22,000 के आसपास के कॉल शॉर्ट करेंगे और मोस्ट लाइकली फिर वो स्ट्रैंगल डे होने के चांसेस है। अब प्रॉब्लम कब आएगा, अगर मतलब मान लीजिएगा अगर 21,800 के नीचे खुल जाती है, इसके नीचे खुल जाती है, तो फिर से मार्केट एक बार ये यहाँ तक आएगा या थोड़ा सा और एक नया लो बनाएगा और फिर शायद फिर से ऐसा एक बाइक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमें क्लीन मूव्स नहीं मिल रहे बिकॉज एज आई सेड यहाँ पर काफी सारे सपोर्ट्स है। ये हो सकता है। और अगर मान लीजिएगा अगर हम स्लाइटली गैप अप ओपन होते हैं, जैसे कि 950 के आसपास वगैरह खुलते हैं और मार्केट ऐसे थोड़ा सा स्टेबल रहता है या थोड़ा सा पहले नीचे आता है ये गैप को फिल करने और फिर ऊपर चला जाता है, तो हम ये लेवल तक हम वो उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे अगर ऊपर की तरफ आता है तब। तो मतलब मान लीजिएगा पहले प्राइस इधर खुलती है, थोड़ा सा रिट्रेस होती है, फिर ऊपर आती है, फिर थोड़ा सा ऐसा वेट करके फिर जब भी ऊपर आएगी तब हम ये लेवल तक के लिए प्ले करेंगे। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे इसकी सपोर्ट्स के आसपास ही रुकी है, इसके लिए यहाँ पर भी ऐसे ही मस्ती कर रही है। प्रीवियस वीक के नीचे की क्लोजिंग अब तक तो अच्छी से आई नहीं है और वैसे भी हमें फ्राइडे तक वेट करना है बिकॉज इट्स अ वीकली कैंडल। अब चलते हैं डेली में। डेली में क्या हो रहा है, एवरीडे अगर आप देख रहे हो पिछले 5 दिन से डोजी बन रहा है, इसका मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है, ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है, बिकॉज बायर ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और सेलर्स नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बिकॉज नीचे की तरफ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की तरफ सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइसेस को नीचे ले आते हैं। तो ये कांस्टेंट झगड़ा चल रहा है बिटवीन, इनफैक्ट कल कल का दिन था हमारे लिए इनसाइड बार और हमें लगा था क्लीन मूव मिल सकता है, या तो इसका हाई या तो इसका लो ब्रेक करे, पर मार्केट ने इसका लो तो ब्रेक किया, मदर कैंडल का लो ब्रेक किया, वापस ऊपर आ गया। ठीक है, अभी ये थोड़े दिन के लिए जैसा वॉलेटिलिटी है तो उसको पास होने देते हैं, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस वॉलेटिलिटी में ज्यादा पैसा ना खोए, क्योंकि जब भी फिर डायरेक्शन मार्केट आए तब आपके पास पैसे बचे रहे कि आप नए ट्रेड्स ले लो। तो प्लीज इंश्योर कि आप आपका क्वांटिटी कम करके ट्रेड कीजिएगा जब तक ये वॉलेटिलिटी जाती नहीं है। अब चलते हैं हम 15 मिनट की ओर। अगेन आज क्या हुआ है, जैसे ही हमने देखा था ये छोटे से रेंज को ब्रेक किया, नीचे की तरफ तो आया जरूर, वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही यहाँ पर काफी सारे सपोर्ट्स है, तो एकदम शॉर्ट अगर आप कर भी रहे हो सिर्फ तो फटाफट उसको बुक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल मार्केट वहां पर सस्टेन ही नहीं कर पाती है नीचे की तरफ या ऊपर की भी तरफ। तो जो भी ऊपर की तरफ आपको बुलिश लगेगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट आया और इतने में नीचे आ जाता है, जैसे ही नीचे जाता है आपको लगेगा ब्रेकडाउन आ गया, चलो शॉर्ट करते, इतने में आप मन बनाने से पहले मार्केट घूम जाता है। अब आज क्या हुआ है, जैसे कि मैं ये पर्टिकुलर एक चैनल बता रही हूँ, ये चैनल काफी पुरानी है और इसकी में इसने काफी बार इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को इसने काफी बार टेस्ट कर चुका है। अब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को उसने ज्यादा बार टेस्ट किया है कंपेयर टू सपोर्ट। और दूसरी चीज तो ये है, जब भी फॉलिंग चैनल है उसका ब्रेकआउट्स आर मच मोर पावरफुल। ये एक फॉलिंग चैनल है और इसका ब्रेकआउट बड़ा पावरफुल होता है। अब इसने तो आज ब्रेकआउट तो जरूर दिया था, अभी प्रॉब्लम क्या है, इसमें फॉलो थ्रू भी छोटी सी कैंडल में आई थी, तो प्रॉब्लम वॉज कि ये इसने डाउन मूव भी दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसके लिए देना चाहती हूँ क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में यूजुअली क्या होता है, एक पॉइंट के बाद ऑप्शन सेलर्स थोड़ी से कंट्रोल करते हैं, वो लोग कैसे ऊपर कॉल भी सेल करेंगे और पुट्स भी सेल करके वो लोग बैठे रहते हैं। इसके लिए आई वुड वांट टू गिव दिस अ बेनिफिट ऑफ डाउट ये वाले। तो कल देखेंगे हम कहाँ पर ओपन होता है। अब मान लीजिए कि कल अगर हम फ्लैट ओपन हो रहे, क्योंकि आज मार्केट में इतना बड़ा डे था, फिर मैं मार्केट में इनसाइड बार की एक्सपेक्टेशंस रखूंगी, मतलब आज के रेंज के अंदर घूमे मार्केट। और फॉर सम रीजन अगर ये लेवल टूट जाती है 46,750 और 800, क्योंकि ये वाली भी रेजिस्टेंस काफी बार टेस्ट हो चुकी है तो वीक हो गई है, तो फिर हम मार्केट को 47,200 तक जाते हुए देख सकते हैं क्लियरली। नीचे केस में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे तो जरा, जैसे इस भी दिन मार्केट नीचे तो जरूर गया था, बट 46,300 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है वो। नीचे बहुत ज्यादा यहाँ पर भी सपोर्ट है, फिर यहाँ सपोर्ट है, फिर यहाँ सपोर्ट है, तो और ये सब बहुत अच्छे सपोर्ट्स है, तो यहाँ पर प्राइसेस जब भी आएगा तो ऐसे ही स्पाइक लेकर वापस आएगा।
तो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन मूव के लिए मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मार्केट एक्चुअली बेटर ये होगा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा थम के अगर ऊपर जाए तो एटलीस्ट इतना मूव जो है ये थोड़ा क्लीन मूव मिल सकता है हमें, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन। मान लीजिएगा कि कल कोई बहुत बड़े गैप से खुलते हैं बिकॉज फेड की आज मीटिंग है रात को, तो मान लीजिएगा हम 46 600 700 के आसपास खुलता है और मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ बिताता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम ये बहुत ही अच्छा, ये सबसे बेस्ट सिनारियो होगा हमारे लिए। और दूसरा चांस क्या हो सकता है कि गैप अप तो ओपन हुआ और थोड़ा सा आए नीचे ये गैप फिल करने के लिए, फिर ये यू टर्न ले और फिर ऐसे कुछ करे, इस केस में भी हम थोड़ा लॉन्ग जाने के लिए कोशिश करेंगे। दिक्कत कब होगी, जब मार्केट मान लीजिएगा 46 200 के नीचे खुलती है और यहाँ पर आती है और यहाँ पर से वापस अगर सपोर्ट लेके थोड़ी सी घूम जाती है, फिर वॉलेटाइल होता रहेगा। वो सबसे अच्छा ट्रेड ये होगा कि अगर ये लेवल पर अगर टूट जाती है तब हम ये लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर 46 750 से लेके 46 800 ब्रेक होती है तो हम 47 200 तक खेल सकते हैं। बट जस्ट रिमेंबर 150 180 के आसपास ही बुक कर दीजिएगा प्रॉफिट्स, बिकॉज वी रियली डोंट नो ऐसा हो कि ऐसे कब आ जाएगा आजकल। तो थोड़ा सा जस्ट बी वेरी कॉशियस कि आप आपके प्रॉफिट्स कैसे और तुरंत बुक करें। तो यही थी हमारी एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी। क्या किया है आपने आज मार्केट में, प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपने प्रॉफिट बनाया है, लॉस बनाया और क्या करके प्रॉफिट या लॉस बनाया वो भी अगर बता सकते हो तो और भी बढ़िया। तो मिलते हैं हम कल एनालिसिस के लिए। सी यू टुमारो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज निफ्टी एक्सपायरी एंड होपफुली कल इतनी वॉलेटिलिटी क्रेजीनेस नहीं होगी। लेट्स सी। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर।